Under question 241, under section 125 of the Code of Criminal Procedure, a magistrate has the power a magistrate has the power to grant interim maintenance and the expenses of the proceeding. यही आंसर राइट है. 242, who among the following is not entitled to claim maintenance under 125? इसमें से कौन is not entitled to claim maintenance? तो adoptive mother is entitled, illegitimate minor child is also entitled, divorced wife as long as she does not marry is entitled, only unmarried sister is not entitled to claim maintenance under 125. Under 125(4) of the CRPC, who is the following cannot claim maintenance? इसमें से कौन मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता? तो a wife living in adultery cannot claim maintenance. A wife living separately by mutual consent है क्योंकि तो she cannot claim maintenance. Wife without any sufficient reason refuses to live with the husband, she also cannot claim maintenance. An order for maintenance or interim allowance can be cancelled under circumstances stated under. तो एक कोई ऑर्डर होता है फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम अलाउंस कैन बी कैंसल्ड, वो कैंसिल हो सकता है अंडर सर्कमस्टांसेस. कौन से सर्कमस्टांसेस में? द सर्कमस्टांसेस स्टेटेड अंडर 125 clause 5 of the CRPC. 125 clause 5 of the CRPC, इसके अंडर an order for maintenance or interim allowance can be cancelled by judicial magistrate of first class. In which of the following cases a wife is not entitled to maintenance? इसमें से कौन से cases में एक wife is not entitled to maintenance? तो if she is living in adultery, then she is not entitled to maintenance. If without sufficient reason refuses to live with his husband, so even she cannot claim maintenance. If the parties are living separately by mutual consent, all of the above is the answer. A wife is not entitled to claim maintenance under 125 if she is living in adultery, then she cannot. Then living separately or on unreasonable grounds and on insufficient reasons. Insufficient reasons है तो yes, obviously she cannot claim maintenance. Refuses to live with her husband and living separately by mutual consent. Even this is the answer. Living separately, living in adultery, living separate on insufficient grounds by mutual consent or converted to other religion other than Hindu religion. Yes, even this is correct if she is converted to other religion also. So option number D is में सब कुछ मिला था तो वो होगा. Against the order the magistrate under 125 of the CRPC, the remedy is against the order of the magistrate under 125 CRPC, the remedy is revision in court of district and session judge. Against the order of the magistrate under 125 of the criminal procedure code, the remedy is revision in court of district and session judge. रेमेडी क्या है 125 के अंदर? तो उसका रिवीजन हो सकता है इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. Period of limitation for execution of the order of maintenance under 125. तो limitation period क्या होता है for execution of the order of maintenance under 125 of CRPC? तो 1 year from the date on which it becomes due. Period of limitation for execution के लिए जो period of limitation है, जब वो अब उसके बाद आप execute नहीं करा पाओगे the order of maintenance, तो कब से कब तक? 1 year from the date जब वो execute हुआ था, मतलब वो जब वो order एप्लीकेबल हुआ था उसके बाद 1 ईयर तक उसकी लिमिटेशन पीरियड चलती है. ऑप्शन नंबर ए. मैक्सिमम लिमिट ऑफ 500 दैट कुड बी पेड टू वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर 125 ऑफ द CRPC वाज रिमूव्ड इन. ये कब रिमूव किया गया था? 2001 में इसको रिमूव कर दिया गया था कि मैक्सिमम 500 इज नॉट द राइट अमाउंट. देन monthly allowance for maintenance under 125 of CRPC. Monthly allowance of maintenance under 125 of CRPC is monthly allowance of maintenance under 125 CRPC is monthly allowance of maintenance under 125 CRPC is without any limit.
For the maintenance under section 125 of CRPC, the definition of wife includes definition of wife 125 CRPC में क्या क्या होता है उसमें. तो a divorced wife who is not remarried. A divorced wife who is not remarried. Definition of wife under 125 CRPC is a divorced wife who is not remarried. Option number A. Then, in which case it was held that second wife of a person whose husband first wife is cannot claim maintenance from her husband under 125 CRPC. कौन से केस में ऐसा होल्ड किया गया था कि सेकंड वाइफ ऑफ अ पर्सन whose husband wife is alive, उसकी जिसका husband alive है, in the case in which case it was held that second wife of a person whose first wife is alive cannot claim maintenance from her husband. तो that second wife of a person, किसी आदमी की second wife whose husband's first wife is alive, जिसकी first wife alive है, cannot claim maintenance from her husband. she cannot claim it. तो ये खेमचंद ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में होल्ड किया गया था. In which case Supreme Court held that only a legally wedded wife can claim maintenance. Only a legally wedded wife मतलब जिसको आप lawfully, जिसको आप law के अंडर with all the rights and rituals और when you have registered your marriage, ये सारी चीज़ें जो अब प्रक्रिया जो भी होता है जो लीगली वेडिंग का, उसको आप पूरा जब तक नहीं करते हैं तो only that wife who is legally wedded can claim maintenance under 125 CRPC. So that was Savita Bain Somabhai Bhatia. Which of the following statement is not correct? इसमें से कौन सा statement correct नहीं है? An obligation with reference to 125 CRPC. तो an obligation to maintain a married daughter, एक obligation to maintain a married daughter whose husband is unemployed is of the father of such daughter. एक obligation to maintain a married daughter whose husband is unemployed. एक obligation to maintain a married daughter whose husband is unemployed is of the father of such daughter. 125 cannot be used against a person who does not possesses sufficient economic means. Yes, this is correct. An obligation to maintain a married daughter, एक obligation जो होगा to maintain a married daughter whose husband is unemployed is of the father of the such daughter. तो अगर किसी daughter का husband unemployed है तो ये father की जिम्मेदारी बन जाती है. नो, दैट तो वो जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की ही रहेगी स्टिल. A married daughter who has an obligation to maintain her parents who are unable to maintain themselves. Yes, this is correct. A married daughter has a responsibility and obligation to maintain her parents whose parents are not able to maintain themselves. A wife who has taken divorce from her husband. एक woman है who has taken divorce from her husband and not remarried may claim maintenance from her ex-husband. और वो remarried नहीं है तो she may claim maintenance from her ex-husband. This is also true. केवल married daughter whose husband is unemployed, only she cannot claim from her parents. Point out the wrong answer. इसमें हमें wrong answer point out करना है. An order of maintenance may be passed under section 125 CRPC. एक order पास हुआ था 125 CRPC where a person neglects or refuses to maintain his wife if living separately by mutual consent. His wife, where a person refuses to neglect, एक order of CRPC पास किया जा सकता है 125 CRPC में if his wife is living separately by mutual consent. तो ऐसा नहीं होगा. म्यूचुअल कंसेंट में he can refuse to maintain them. Illegitimate minor child को he cannot refuse to maintain. And legitimate or illegitimate child who has a reason of physical or mental abnormality or injury unable to maintain, even him he cannot refuse. और father और mother को तो बिल्कुल भी refuse नहीं किया जा सकता. Now under 125 of criminal procedure code, what payments per month can be ordered for maintenance? कौन सा
पेमेंट पर मंथ ऑर्डर किया जाएगा फॉर मेंटेनेंस, तो एज ए मैजिस्ट्रेट डीम्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस, जैसा भी मैजिस्ट्रेट डीम्स नेसेसरी। ऑप्शन नंबर डी, कोई ऐसा अपर लिमिट या लोअर लिमिट सेट नहीं की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125(4) ऑफ द CRPC, इसमें से कौन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता मेंटेनेंस अंडर 125 क्लॉज 4 ऑफ द CRPC? वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, she cannot claim, and wife living separately by mutual consent, even she cannot claim. So both A and B. Point out the incorrect answer. 125(4) में wife will not be entitled to maintenance allowance if she is living in adultery. अगर वो she is living in adultery, she has refused to live with her husband without sufficient means. उसने she has refused to live with her husband without sufficient means. She is living separately by mutual consent. वो she is living separately by mutual consent, and she embraces some other religion. तो she embraces some other religion, इसके according will not be, so this is the incorrect answer. केवल इसके बेसिस पे मेंटेनेंस आप नहीं करेंगे। अगर वो कन्वर्ट हो गई है only then, maybe embraces is not the other reason, only the conversion can be, then she is married and to some other person and has converted to another religion. Under which provisions of the 125(4) of the criminal procedure who of the following cannot claim maintenance from husband? इसमें से कौन claim maintenance नहीं कर सकता? तो पहली चीज़, वाइफ हर सेल्फ अर्निंग, येस शी कैनॉट क्लेम। वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, शी कैनॉट क्लेम। वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो शी कैनॉट क्लेम। आई बिलीव व्हाट वाज द क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट क्लेम मेंटेनेंस, तो जो जो खुद अर्न कर रहा है, बट शी कैन क्लेम अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो। और देन वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, दिस इज लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, वहाँ पे वो नहीं मांग सकती। हु हैज़ डिवोर्स बाय हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट री मैरिड, शी कैन क्लेम। हु हैज़ ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट री मैरिड, जिसने ऑब्टेन कर लिया डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट री मैरिड, इवन शी कैन क्लेम। तो ओनली सेपरेटली लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो शी कैनॉट क्लेम। पॉइंट आउट द एक्यूरेट रिस्पॉन्स, इसमें से कौन सा एक्यूरेट रिस्पॉन्स होगा? 125 ऑफ द CRPC, फॉर हु अमंग द फॉलोइंग कैनॉट क्लेम मेंटेनेंस, इसमें से कौन क्लेम मेंटेनेंस नहीं कर सकता? ओनली अ वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, केवल अ वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री कैनॉट क्लेम मेंटेनेंस, and only a wife living separately by mutual consent can claim maintenance. Under which of the following section of the Criminal Procedure Code monthly allowance on interim allowance on the maintenance can be altered? तो 127 में जो है वो 127 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मंथली अलाउंस और इंटरिम अलाउंस फॉर मेंटेनेंस कैन बी ऑल्टर्ड। Among the following who has not competent to use the civil force for dispersal of assembly under 129, इसमें से कौन जो है वो competent नहीं होगा to use civil force for dispersal of adultery? Any judicial magistrate who is not competent to use civil force for dispersal of assembly under 125 129 of CRPC. Under which of the following section of the criminal procedure code armed forces can be used to disperse assembly for maintenance public security? तो सेक्शन 130 के अंदर ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर्म फोर्सेस कैन बी यूज टू डिस्पर्स द असेंबली, और कौन नहीं कर सकता? हु इज नॉट कंप्यूटेड टू यूज सिविल फोर्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ असेंबली अंडर 129, एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कोई फोर्स यूज़ करने की पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास भी है, ऑफिसर इंचार्ज बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ द पुलिस इंचार्ज, ये इनके पास भी होती है। Which of the section of the Code of Criminal Procedure district magistrate or subdivisional magistrate may prevent environmental pollution? 133 के अंदर environmental pollution. A conditional order for removal of public nuisance under 133 CRPC. A conditional order for removal of A conditional order for the removal of public nuisance under 133 of CRPC may be passed against A conditional order for the removal of public nuisance can be passed against
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के भी अगेंस्ट पास हो सकता है फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास के अगेंस्ट भी, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के भी खिलाफ यूज़ हो सकता है अ कंडीशनल ऑर्डर टू रिमूव पब्लिक न्यूसेंस। और who is authorized for removal of public nuisance? Executive magistrate is authorized for removal of public nuisance. If a person against whom an order is used under 133 CRPC is made appears or shows cause against the order, the magistrate shall take evidence into matter as in the summons case. एक पर्सन है, if a person against whom an order को is an order under 133 CRPC is made, एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट 133 का ऑर्डर पास किया गया, अपीयर्स एंड शोज कॉज, वो अपीयर करता है और एक कॉज शो करता है अगेंस्ट द ऑर्डर, द मैजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस इनटू मैटर एज इन द समन्स केस। तो और वो आकर अगर जिस मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया वो कॉज आकर शो कर देते हैं तो उसको समन्स केस के जैसे उस मैटर को डील किया जाएगा। टेक द एविडेंस इनटू मैटर एज द समन्स केस। Which of the following provisions of the District Magistrate or Subdivisional Magistrate may prevent environment pollution? कौन इसमें से environment pollution के against Subdivisional Magistrate को order pass किया जा सकता है? That is 133 of CRPC. Under which of the section of the CRPC conditional order for the removal of nuisance may be issued? That is 133 CRPC के अंदर conditional order for the removal of nuisance may be issued. मार्क दी करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर मार्क करना है। कंडीशनल ऑर्डर पास बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर 133 ऑफ द सीआरपीसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन सिविल कोर्ट। तो अ कंडीशनल ऑर्डर, एक कंडीशनल ऑर्डर जो पास हुआ था अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट अंडर 133 ऑफ द सीआरपीसी ऑफ द कोर्ट कैन नॉट बी, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इन एनी सिविल कोर्ट। दिस इज करेक्ट। वील ड्रॉप इट हियर। थैंक यू।